India is one of the largest country in the world, where it is quite an arduous task to bring the light of education to every person to the remotest corner of the country. Now, Government of India has taken a new initiative in this field, Swayam Prabha. This is a novel idea providing quality education with the help of satellite technology and science. मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? Swayam Prabha is dedicated to spread the light of education to the remotest corner of the country. With its 32 direct-to-home channels, it will transmit various programs on every branch of educational sector. Each of the 32 channels will telecast fresh 4-hour educational content every day, which will be repeated multiple times so that the viewer can pursue it according to their own convenience. The future plan is to increase this content to 6 hours. The content of this program will be based on the graduate and postgraduate curriculum, and they will be planned in a manner so that every student would be benefited by them. These programs will be made in a classroom format, and lectures will be done by the best faculty of the premier educational institutions of the country so that they are more effective. Programs telecasted in these channels will be based on engineering, science, humanity, commerce and other streams of education. Apart from it, there are 4 IIT PAL channels to telecast programs in mathematics, physics, chemistry and biology to prepare students from 11th and 12th standards for competitive exams like IIT JEE. This marvelous wonder of technological advancement can be viewed at www.swayamprabha.gov.in, where students can get the information about the programs to be telecasted on the channel or view the programs directly. They can lodge their complaints on the site and give their suggestions also. The subscribers of DTH service of DD Direct and Dish TV can view Swayam Prabha channels without any extra expense in the same setup. स्वयं के द्वारा देश के नामी गिनामी बहुत अच्छे प्राध्यापक एक एक कोर्स कंडक्ट करेंगे। वो लेक्चर भी देंगे, वहाँ मटेरियल भी मिलेगा, ट्यूटोरियल भी होगा और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, परीक्षा भी होगी। जो छात्र है उनको क्रेडिट भी मिलेगा, जो छात्र नहीं है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस स्वयं के कोर्सेज को कभी भी कहीं से भी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वयं प्रभा। तो ये 32 चैनल आपको पूरी तरह से फ्री, कहीं भी जहाँ केबल नहीं पहुँची है, जहाँ बाकी कुछ नहीं पहुँचा है और जहाँ इंटरनेट नहीं भारी ठीक तरह से मिलता है, वहाँ ये सबसे बेहतर इलाज है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल शिक्षा के लिए, उसी की ये पहल है। Swayam Prabha, Digital India, Educated India.